Hello guys, so today we will be discussing about molecular orbital theory. As we know, this theory comes again almost at the end of chemical bonding chapter, where you guys have already covered up around 60-70 pages of chemical bonding in your book, and really we feel that we are worked up now, and how do we take a new theory altogether. So that is why we have brought out this class of molecular orbital theory. Here we will try to make it easy for you. Let us enjoy this. Let us make it much more enjoyable. That is my basic responsibility over here. I will just try to make it easy for you. So what is molecular orbital theory? Beforehand you must have a knowledge of valence bond theory. So I request you to go through the valence bond theory proposed by Hitler and London before commencing this class. Okay. So first of all, you go through the valence bond theory. Here I will discuss, and obviously do have a pen and paper and pen and your copy in your hand. Otherwise, this is futile. I will speak, you will listen, and after all I will forget and you will also forget. So everything will evaporate. So we don't want that, right? So at the end of the day, we have to be successful. I have to be successful. You also have to be successful. That's it. So hopefully I'll be successful in inculcating this into your mind, and you will be successful in producing some good results by this. So beforehand I would like to say what is valence bond theory. In short we call it VBT. Okay, it is valence bond theory. So in valence bond theory, basically what it says is the bond formation occurs due to interaction between the atomic orbitals of two atoms. Okay? The bond formation will occur due to interaction between atomic orbitals of two atoms having half filled configuration. Okay? So suppose there are two atoms and there is one half filled orbital and there is another half filled orbital. Those two will overlap to give a new atomic orbital. So overlap of atomic orbital will cause the bonding. That is what we know until now. Okay. So one thing is pretty much clear. When we talk about a bond over here, suppose here is a unfilled orbital and here is a unfilled orbital. Okay. When we talk about this and we are talking about this kind of bonding. So now it will become opposite spin. Sorry. So this kind of bonding, when I am talking about this kind of, now this is the atomic orbital, this is the atomic orbital. Remember. So it's like this. Suppose there is a nucleus over here and you have one electron, and here there is another electron. I am just making it simple for you, and here there is a nucleus. Okay. So this is that 1 unpaired electron, this is 1 unpaired electron, and this is bonding it like this. Now suppose there is another electron also somewhere over here and here somewhere. Okay. So here this electron also occupies some atomic orbital of this element, which is not taking part in the bond. And valence bond theory doesn't say anything about the other orbitals of the atom. It just says about that orbital which is half filled and is involved in the bond formation. But it don't say anything about the other orbitals of the atom. So in case of valence bond theory, all the other orbitals is undisturbed. In bond formation, all the other orbitals is undisturbed. But come on man, let's see this thing. This is a positive charge, this is a positive charge, this is negative, this is negative, this was negative, this was negative. This two has formed a bond, and you mean to say that this bond formation will not cause any effect on these electrons. That is quite impossible, because this electron and this electron must have some attraction. Similarly over here, and after bond formation, repulsion. After bond formation, this electron may repel this electron may repel this. All these interactions are there. So obviously it is pretty much clear it cannot happen that only those electrons which are taking part in bond formations are involved in formation of the total bond, and the other atomic orbitals are not affected. This is not possible. Okay. So in simpler words, not only the atomic orbital taking part in the bond formation is interacting in this total system or the total process,
somehow the other atomic orbitals are also involved, and that is what the valence bond theory doesn't say. It says all the other orbitals remain undisturbed, which we think is not possible. Okay, which we think is not possible. So this is the main issue with the valence bond theory. Okay, so for that we will bring up a new theory which is in the subject matter today. Okay, so this is the main problem with the valence bond theory. There are some other problems which must be recirculating in our mind. Valence bond theory doesn't explain the coordinate bonding. Okay, valence bond theory explains that two atomic orbitals will come in and bond together, and both will have one of them is unfilled. Okay, but in case of coordinate bonding, if you see, only one of the atomic orbital is going to donate the electrons for the total bonding. So that is not explained by VBT. ठीक है, VBT वो explain नहीं करता है. So coordinate bonding is not explained. Number two is paramagnetic nature of oxygen molecule. If you see oxygen molecule O2, and if you go by the valence bond theory, and if you try to find out in oxygen molecule is there any unpaired electrons, you will get to find that there is no unpaired electron present in the oxygen molecule in O2 after bonding. So if there is no unpaired electron, obviously there won't be any paramagnetic nature. But in actual sense, oxygen is paramagnetic. ठीक है, oxygen is paramagnetic. So this is not explained how it is forming a paramagnetic kind of nature. It is not explained by VBT, valence bond theory. ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है आपका VBT. नेक्स्ट, देयर आर टू काइंड्स. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड फॉर्मेशन और हाफ फील्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, तो दो इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको, दो अलग अलग एटम से हाफ फील्ड होना पड़ेगा. ठीक है, अभी अगर ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देखे तो उसका जो फॉर्मेशन है वो भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. ठीक है, इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देन हाउ डज दिस बॉन्ड हैपेंस? बिकॉज सी 1 + 1 2 बॉन्ड हो सकता है, अनदर 1 + 1 2 सो डबल बॉन्ड हो सकता है, 1 + 1 3 सो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है. एवरीथिंग इज इवन नंबर 2 4 6. बट ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में इवन नंबर का फंडा तो है नहीं. तो फंडा अगर है नहीं तो कैसे फॉर्म होता है ये अपने को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं बताता है. ठीक है, सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डजंट से अस एनीथिंग अबाउट द ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन. ओके, नेक्स्ट, another type of molecules are there which are basically electron deficient molecules. ठीक है, so those kind of molecules are basically those which doesn't have enough electrons to form the bonds. But if you go to the valence bond theory again, what does it really require? It requires half-filled electrons in even numbers in totality, one coming from each atomic orbital to form the bond. But if I am talking about this kind of molecule, if you see H2 plus, so it is having how many electrons in totality? It is having H2 plus means 1 1 2, so one number of electron is there. So here how does the pairing happens? The pairing will not happen in case of H2 plus, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 2 इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम चाहिए आपको. तो ये वाला मॉलिक्यूल कैसे बन गया है H2 प्लस, जो H2 बनने के बाद एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है. अगर एक बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो बॉन्ड रहा कैसे? तो ये सब चीज हमको नहीं मालूम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से. ठीक है, तो समझो, टाइम लो, रिवाइंड करो, देखो. अच्छा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरमेटालिक कंपाउंड्स. देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड, व्हिच वी कैन कॉल इंटरमेटालिक कंपाउंड्स, व्हिच आर आल्सो नॉट एक्सप्लेन्ड. दैट इज द मेटालिक बॉन्डिंग पार्ट इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, सो फॉर दिस वेरी रीजन Hunt and Mulliken brought about a theory which is called molecular orbital theory, which is much more rational in terms of when we are talking about those coordinate bonding, paramagnetic nature, electron deficient compounds like H2 plus and your odd electron molecules, which will be able to explain much easier in a much easier way when you talk about molecular orbital theory. So that is why basically molecular orbital theory came in action. So ये नोट डाउन कर लो हमने जो जो बोला है. पेन एंड कॉपी तो होगा आपके पास. सो आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू. ठीक है, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूं, आप लोग नोट डाउन करो. हो गया आपका.
चलिए इसको रफ कर देते हैं. And now we'll directly go into the molecular orbital theory, or we'll study that basically what did Hunt and Mulliken has to say about this bond formation. ठीक है. Okay. So Hunt and Mulliken basically brought about this molecular orbital theory. Until now in VVT we have studied that the atomic orbitals are taking part in the overlap. Hunt and Mulliken said that there is complete mixing of the two atoms including all the atomic orbitals. Okay, so basically Hunt and Mulliken wanted to say, if we go in layman's term, then when a molecule is getting formed, it's not again about those S, P, D, F, those atomic orbitals. Okay, so some new kind of orbitals are getting formed in which all the atomic orbitals are involved. Okay, all the atomic orbitals are involved. After these atomic orbitals are involved together, they form a new generation of orbitals which is specific to the molecule and have no relationship with the atoms. Okay, so it is specific to the molecules, and that orbital is called molecular orbital. Okay. Now this is what is called molecular orbital. This is specific to the molecule. This is for molecule. Okay. And this is basically under interaction of both the nuclei of the atoms. If I am talking about two atoms bonding together, then both the nuclei are involved over here. All the atomic orbitals are taking part in the bonding. Okay. So this is what molecular orbital is. When all the atomic orbitals are involved, they basically mix up to form a new generation of orbitals which is called molecular orbitals. So what is molecular orbital? If I go for the definition. Okay. So molecular orbital is basically a space. Okay. It is a space. First of all, it is a space comprising of nuclei of combining atoms. Comprising of nuclei of combining atoms. Comprising of nuclei of combining atoms, around which there is maximum probability of finding electrons. लिख लो. So space बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. जो स्पेस रहेगा कहां पे रहेगा? नियर द न्यूक्लियाई ऑफ द टू एटम्स. आई एम टॉकिंग अबाउट टू एटम्स. आई एम टॉकिंग two atoms combining in the bond where there is maximum probability of finding electrons. So तीन स्पेस में आपको तोड़ दिया आपका डेफिनेशन को. ठीक है. ठीक है. स्पेस कहां पे रहेगा? कंप्राइजिंग ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स where there will be maximum probability of finding electrons. That is basically the definition of the molecular orbital. ठीक है. So now, as we already know, what is electron? Electron is basically a wave function. We are talking about electron over here. So electron is what? It is a wave function. It is a wave function. Okay. Electron is a wave function. And this wave function is basically the molecular orbital where the electron is going to reside. ठीक है. So मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स आपका कहां पे होगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे होगा. और ये एक्सक्यूज मी, ये जो प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, दिस इज इन फॉर्म ऑफ ए वेव फंक्शन. ठीक है. तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन इज ए वेव. इट्स लाइक दिस. ओके, इलेक्ट्रॉन इज ए वेव. ठीक है.
there are some other properties which I have to discuss over here. Molecular orbital will be formed by atomic orbital. अभी क्या हुआ? Molecular orbital, how does the molecular orbitals get formed? It is by mixing of the atomic orbitals. Which kind of atomic orbital will be getting mixed? Comparable energy वाला, ठीक है? Comparable energy वाला, ठीक है? So if the atomic orbitals are of comparable energy, then only they will combine to form the molecular orbitals. ठीक है? लिख लो. Okay. चलो. Now suppose there are two atomic orbitals over here. Okay. Now two of them are coming together. It is going to form one molecular orbital over here and another molecular orbital in the bottom. See, at the end of the day, if there is one electron over here, another electron over here, there should be also two molecular orbitals, because two atomic orbitals will give rise to two molecular orbitals only. ऑर्बिटल में आपको एक एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी एक एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है. ठीक है. सो दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कम्स टुगेदर. अभी कंपेरेबल एनर्जी में होगा तभी टुगेदर में आएगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा. ठीक है. नाउ देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स व्हिच दिस एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल फॉर्म. इफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इन फेज. ओके. तो अगर देखो, अगर यहाँ पे एक वेव है और यहाँ पे भी एक वेव है, ठीक है, ये अगर सेम फेज में होगा, ठीक है, सेम टाइप ऑफ फेज, तो क्या हो जाता है? आपको याद है साउंड में क्या होता है? रेजोनेंस हो जाता है, एड अप हो जाता है एम्पलीट्यूड. तो आपका इसका एड अप हो जाएगा, एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा, मतलब दे आर इन फेज. फेज में जाएगा तो दोनों की तरफ मिक्स हो जाएगा. तो मिक्स होने का चांसेस बढ़ जाता है इफ दे आर इन फेज. देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ मिक्सिंग इंक्रीजेस if they are in phase, and if such a probability increases, then that is called bonding orbital. ठीक है, bonding orbital if it mixes. And if suppose it is not in phase, इसके साथ ये वाला हो गया, पकड़ लो, नीचे चला गया, तो ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, तो what will happen? It will cancel out together. So bonding करने का चांसेस नील हो जाता है. In that case, the orbital is antibonding orbital. ठीक है, antibonding orbital. So antibonding orbital will have higher energy. That is why I have put it in the top portion. Higher energy होगा. If it is higher energy, then only it will be unstable. Because at the end of the day, bonding is about stability, which is basically about minimum energy. What is bonding orbital? It will having lower energy. ठीक है. अब सपोज कर लो इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, ये दोनों मिक्स हुआ, there is another energy E3 and E4. As per law of conservation energy, E1 plus E2, which was the energy of the atomic orbital, will always be equal to the energy of the molecular orbital. But there is a catch over here. The catch is, if you, I'll draw it and I'll show it to you. थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे तो समझ में आ जाएगी चीज. ये हम लोग एक AO ले लिया. सो सपोज दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. एंटी बॉन्डिंग हमेशा ऊपर रहेगा, एंटी बॉन्डिंग हमेशा ऊपर रहेगा आपका. देखो ये आपका AO है और एक, अभी इफ यू सी दिस टू, दिस आर इन द सेम लाइन. ओके, थोड़ा मेरा ड्राइंग का प्रॉब्लम हो गया. सेम लाइन. सो ये आपका एनर्जी का ग्राफ है, सपोज कर लो. दिस इज एनर्जी. So molecular orbital जो एंटी बॉन्डिंग होता है, that is having higher energy, unstable, and जो बॉन्डिंग होता है, that is having lower energy. This is bonding orbital, that is having lower energy. ठीक है.
सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल का लोअर एनर्जी। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपका जितना इंक्रीज हुआ एनर्जी, यहाँ पे उतना कम नहीं हुआ, ठीक है। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल lowering, I can say the lowering of energy of bonding orbital is less than increase of energy of anti-bonding orbital, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इफेक्ट ऑफ एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मच मोर, ठीक है। इफेक्ट ऑफ एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मच मोर, ठीक है। वो आने ही नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को आपको बॉन्डिंग करने ही नहीं देगा, तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा है। इसीलिए इंक्रीज जितना होगा एनर्जी का आपका एंटी-बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, उससे बहुत कम आपका लोअरिंग होगा एनर्जी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। बट रिमेंबर वन थिंग, टोटल कंजर्वेशन रिमेन्स सेम, दैट इज इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी विल बी ऑलवेज इक्वल टू इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी, ठीक है। सो दैट हैज टू बी देयर, ठीक है। सो ये सब नोट डाउन करो। तो आई विल जस्ट रीइटरेट वंस मोर। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है? ऑल द एटॉमिक ऑर्बिटल, रिमेंबर इट इज नॉट द एटॉमिक ऑर्बिटल दैट इज having the unfilled one as we have studied in the valence bond theory. All the atomic orbital will mix up to form a new generation of orbitals that is called molecular orbitals, which is specific to the molecules. तो molecules के लिए हम लोग अलग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। पहले क्या लिखे थे? 1s, 2s, 2p, 3s ऐसा लिखे थे। इसके लिए भी अलग एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। The type of electronic configuration in case of molecular orbital will be different from the normal element, okay? That is a complete different way of filling up the molecular orbital electronic configuration, ठीक है। So there will be molecular orbital formed from the mixing of all the atomic orbitals, ठीक है। अभी कौन सा टाइप का एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने से molecular orbital फॉर्म होगा? कंपेरेबल एनर्जी होना पड़ेगा, मतलब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल का एनर्जी ऑलमोस्ट कंपेरेबल होना पड़ेगा, नहीं तो आपका वो मिक्सिंग नहीं होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या देखें, एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन किया, देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। वी हैव सीन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वन काइंड इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग कब होता है? बॉन्डिंग तब होगा जब आपका इलेक्ट्रॉन एट द एंड ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन ऑक्युपाई करेगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इज ए वेव फंक्शन, ठीक है। सो अगर दोनों का सेम फेज में रहे तो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। सो इन दैट केस इट फॉर्म्स ए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है। एडिशन होता है, एडिशन होने से बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेगा। और अगर दोनों सेम फेज में नहीं रहे, सपोज ये प्लस है और ये आपका माइनस है, तो इन दैट केस इट विल गेट सबट्रैक्टेड एंड इट विल ऑर्बिटल में एनर्जी कम रहेगा और ये स्टेबल होगा। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी ज्यादा रहेगा और ये अनस्टेबल होगा। दिस टाइप ऑफ ओवरलैप, दिस टाइप ऑफ interaction between the two atomic orbitals is called constructive interference between basically two wave functions, ठीक है। constructive interference, ठीक है। और इस टाइप का जब आपका इंटरफेरेंस होगा दो ऑर्बिटल का और दो इलेक्ट्रॉन वेव्स का, तो उसको बोलते हैं आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। क्लियर हो रहा है? धीरे धीरे क्लियर हो रहा है ना। अभी देखो, एक चीज मैं जब दोबारा बोलता हूं आपको क्लियर हो जाता है। सिमिलरली अगर एक चीज एक बार की जगह दोबारा पढ़ोगे तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो जो जो पढ़ा है आपको होपफुली क्लियर हो गया। विल गो इनटू मोर डिटेल्स, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लो एक बार, ठीक है।